पहले कौन सी बात है? इसके ऊपर। Anybody? Assalamu alaikum. How are you people? वालेकुम अस्सलाम सर। अभी कोई स्टूडेंट आया नहीं है सर एक भी। जी जी, ऐसे ही मैं देख रहा था वैसे। हाँ जी, आप सर कौन बोल रहे हैं? सर एहसान लाहौर से हूँ। अच्छा अच्छा। कैसे हैं एहसान साहब, ठीक हैं? सर शुक्र लगा सर। आप लाहौर लाहौर ऑफिस बैठते हैं या इस्लामाबाद कराची? देखिए सर लाहौर लाहौर ऑफिस से ही देखते हैं, शाहिद साहब भी लाहौर में ही है। अच्छा 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 अच्छा, सही से। अच्छा, ये डे बाय डे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अब कम हो रही है। सर 28 को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, कुछ पेपर्स के लिए मेरे ख्याल से, इसलिए ये थोड़ा सा strength काफी कम हो गई है। नहीं तो सर, व्हाई नॉट, आप अगर ऐसा है तो ये एक वीक के लिए आप ऑफ कर देते। सर लेकिन उसमें कुछ लोग हो सकता है हों जो पढ़ना चाह रहे हो, हम इसलिए कर नहीं सकते। ठीक ठीक ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक ठीक। सर 10 मिनट वेट कर लेते हैं। मैं कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, वेट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बस ठीक है, कोई चलें सर, ऐसा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू।
हेलो हेलो। जी फहद, अस्सलाम वालेकुम। फहद, अस्सलाम वालेकुम। फहद, आप मुझे सुन रहे हैं? फहद, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मिस्टर अजीम। अजीम, कैन यू लिसन मी? जी सर, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम, आप मुझसे मुझे सुन रहे हैं? जी सर, सुन चलिए, आज तो स्टूडेंट्स आर जस्ट वन। सॉरी। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मेरा ख्याल शायद पेपर्स की वजह से अब दो लोग, मेरा ख्याल फहद आ गए हैं, आप हैं, दो लोग हैं अभी। ओके, वी स्टार्ट। और आर आई हैव सिलेक्टेड टुडे इज अ थ्री टॉपिक, आपके उसी सी पार्ट में से है। और वन इज दिस वन, रिस्क एंड कॉस्ट बिहेवियर के हवाले से अगर आप देखेंगे अपना टॉपिक उसमें, ठीक है? जी सर, मैंने आपने जो स्लाइडें भेजी थी मैंने सारी एक दफा रिव्यू की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मेरा ख्याल क्वाइट दिस इज कॉमन वन और वेरी मच रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड concerned with the finance side. But anyhow, I think अच्छा, इसमें आज अजीम थोड़ा सा ब्रीफ करें ये व्हाट अबाउट कॉस्ट बिहेवियर, जब हम कहते हैं उससे क्या मतलब है?
सर उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जी क्लासिफिकेशन क्या है, और उसकी असरटेनमेंट क्या है, मतलब वो इस वाले से है ये बिहेवियर। जी जी ठीक है, मतलब मीन दैट हाउ कॉस्ट बिहेव, तो द मेन बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इज सीन with respect to its variable cost, fixed cost, semi variable cost के हवाले के साथ। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज proportion to activity levels. Variable cost per unit remains the same regardless of volume, at least within a relevant range. Variable cost may become smaller per unit once certain volume thresholds are reached. So that is paper for a book publisher. True variable costs are costs which are completely proportional to volume, or step variable costs are those which increase in step function, that is industrial engineers के हवाले से. Uh, Fixed variable cost, you may say, are different type of companies have different level of fixed and variable cost. High fixed cost, lower variable. So power in generator regardless of output, the huge, बहरहाल इसमें हाई वेरिएबल कॉस्ट में क्लीनिंग कंपनीज होती हैं. एज एक्टिविटी इंक्रीजेज द कंपनी कैन यूजुअली हायर मोर स्टाफ इजीली, so on like. As activity decreases, it may however have some difficulty reducing staff level depending upon labor laws. Companies with high fixed cost must reach a certain volume to defray their fixed cost and break even. Are you group project companies higher in fixed or variable cost? अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरा ख्याल है मेन चीज़ है, which basically is going to tell you, this is total utility cost, that is activity. Like now this line horizontal is a fixed cost, and this is what the cost which may be going to vary, or that is a variable cost. ठीक है, तो ये टोटल जो कॉस्ट है उसके अंदर कुछ आपका पोर्शन फिक्स्ड है, और ये ब्लू लाइन वाला फिक्स्ड है, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारी टोटल कॉस्ट के हवाले के साथ चीज़ आ सकती है. तो ओवरव्यू ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट जो हमारे पास है, और इसमें लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फिक्स कॉस्ट. अच्छा अजीम, ये बताइएगा कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट क्या है? सर प्रोडक्ट कॉस्ट वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हुए जो कॉस्ट इंकर होती है, और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सेलिंग और एडमिन. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. ये आवाज कुछ आ रही थी. जी फहद, आप भी सुन रहे हैं आप मुझे? फहद, फहद आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ. चलिए, ओके, थैंक यू. बात कीजिएगा अगर कहीं कुछ इशू होगा. अच्छा जी, ऐसा है ठीक है कि कंपैरिजन ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट. अजीम, क्या है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्या चीज होती है? सर अब्जॉर्प्शन के अंदर हम मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को भी शामिल कर लेते हैं अप्लाइड रेट पे, या कोई भी रेट हो उसके पर यूनिट करके टोटल फिक्स कॉस्ट अच्छी ले लेते हैं, जबकि मार्जिन में जस्ट हम वेरिएबल लेते हैं. वेरिएबल लेकर नीचे फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है उस पैटर्न के ऊपर हम फॉर्मेट के ऊपर जो है ना वो कॉस्टिंग करते हैं. नहीं, अब कुछ आवाज आ रही है मेरा ख्याल. अजीम, इज इट ऑन योर साइड और फहद की साइड पे है? सर मैं लोकेशन चेंज कर लेता हूँ. अच्छा अच्छा, अब ठीक है, क्लियर है सर? अब Hello? जी 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 जी, अब ठीक है, अब ठीक है. सर दोबारा बताओ. अच्छा प्लीज प्लीज, जी जी. अच्छा आप देखिए, ऐसा ऐसा है
कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना जी, उसके अंदर हम तमाम जो कॉस्ट है, इधर वेरिएबल इधर फिक्स, उसको हम उसमें नोट डाउन करते हैं या वी कंसिडर इट। देखिए यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड है। ये हमने कहा जी प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी इतनी आ गई और लाइक दिस वन। जबकि हम वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड के अंदर जिसको हम मार्जिनल की बात करते हैं, तो उसमें देखा हमने क्या किया है कि ये डायरेक्ट लेबर, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, और इसमें हमने फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं किया। जबकि हम प्रोडक्ट कॉस्ट इसमें कितनी नोट कर रहे हैं, 6,30,000। तो 1 लाख जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर शामिल किया, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। आप लोग बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में द टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वुड आल्सो बी included, while in marginal cost only the variable cost basically is treated one like. So in simple terms, the difference between variable and absorption costing is that fixed overhead is separated and treated as a non-product cost, period cost के तौर पे, जबकि variable costing becomes very useful for analyzing different volume scenario के लिए हम करते हैं। और this is my dear types of cost behavior pattern variable. A variable cost is a cost whose total dollar amount varies in direct proportion to change in activity level. So this is a variable. Total variable cost is proportion to the activity level within the relevant range. So इसका ये एक पिक बनेगी जो behavior है। As an example of activity base, consider the overage charges on a cell phone bill. The activity base is the number of minutes used above the allowed minutes in the calling. So this is what that is a variable. As the minutes talk is more one, so charges are more one. So that is the example of the pure sort of the वेरिएबल कॉस्ट। नाउ जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो एक कमिटेड है, एक डिस्क्रिशनरी होती है। जो कमिटेड है लॉन्ग टर्म कैनॉट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन शॉर्ट टर्म। Discretionary may be altered in the short term by current managerial decisions, or example have been given, depreciation on building and equipment and real estate taxes, ये हमारी committed cost होती है। जबकि discretionary में एडवर्टाइजिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चूँकि ये हमारी चॉइस है कि अगर हम चाहेंगे तो खर्च हो जाएगी, अगर नहीं चाहेंगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। Anyhow, what we can conclude, dear students, the basic purpose was just to give you understanding of the cost. So cost is of two type. There is a fixed cost, there is a variable cost, or I think in addition to this one, so there was a concept of the absorption costing and marginal costing, or you may say the वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम्स। मेरा ख्याल इसके अलावा हमें कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि अजीम, व्हाट इज़, इफ़ आई जस्ट आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है? अजीम, अजीम आप सुन सकते हैं मुझे? कॉस्ट में क्या फ़र्क है और एक्सपेंस में? फहद बेटा जी आप बताइएगा। एक्सक्यूज मी, जी मैंने पूछा है कि कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? सर कॉस्ट सर कॉस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, मतलब कॉस्ट के साथ कुछ बेनिफिट भी है।
अगर हम कॉस्ट फिल्टर करें, एक्सपेंस के साथ लाजमी नहीं है कि बेनिफिट भी है। नॉट नहीं, क्लियर। आप चलो मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। डेप्रिसिएशन के हवाले से ज़रा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ, डेप्रिसिएशन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखो, कॉस्ट जब हम कहते हैं ना, कॉस्ट ये है कि द पेड प्राइस ऑफ एनीथिंग विच यू पे इन ऑर्डर टू गेन अ फ्यूचर बेनिफिट। आपने को फ्यूचर का बेनिफिट लेने के लिए जो पे करके उस चीज़ को अक्वायर किया है, वो उसकी कॉस्ट है। जैसे यू हैव परचेज अ प्लांट, तो प्लांट हैज़ बीन परचेज्ड, द कॉस्ट इज़ 1 million, सो दिस इज़ द कॉस्ट। और जैसे जैसे उस प्लांट को आप यूज़ करते जाओगे, तो एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। और द बेस्ट एग्जांपल कैन बी गिवन रिगार्डिंग द depreciation, because once you purchase, the whole amount is treated as a capital expenditure, mean as a cost, or as the asset basically is being used। तो उसका वो यूज्ड जो एक्सपायर्ड जिसका बेनिफिट हम ले लें, वो क्या कहलाता है? वो एक्सपेंस कहलाता है। अजीम, क्लियर हुई बात? जी सर। जी सर। फहद, इज इट क्लियर? जी सर। अजीम, लेकिन थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि ये आपके पहले माइंड में थी ये बात। जी सर, आप भूल भाल गए थे, देखिए आपने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हाँ, कॉस्ट, देखिए दुनिया में जो कोई भी चीज़ जो आप अक्वायर करते हो ना, जिस प्राइस पे, वो कॉस्ट है। और उसको जब आप जितना पोर्शन उसमें से यूज़ कर लो, वो एक्सपेंस होता है। और उसकी बेस्ट एग्जांपल ये हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं, इवन वो जो पेटेंट है, कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, गुडविल्स हैं, ये भी बेसिकली जब आप अक्वायर करते हो, परचेज करते हो या पेटेंट लेते हो, तो आपने उसकी कॉस्ट पे की होती है, जिसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और वो कॉस्ट ट्रीट होगी। और जितना उसका हर साल पोर्शन हम यूज्ड अप कर लेते हैं, वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। ये है मेजर क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा बी आपका जो पोर्शन है, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस, दिस इज रिलेटेड टू मेन तो है ये हमारा, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हवाले के साथ है। अगर आप अपना टॉपिक देखेंगे तो उसमें डीसीएफ एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हवाले से है। तो डीसीएफ इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और नेचुरली फॉर अप्रेजिंग योर इन्वेस्टमेंट, I mean, these are the tool which we are using. Now, I think investment appraisal is what we are having the cash flows, the payback period, accounting rate of returns, ठीक है ना जी, और एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके हुए हमारी जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। अगेन फहद, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, से क्या मतलब है? फहद, मे आई टॉक टू यू? अजीम, एक्सक्यूज मी। अजीम, मैं आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आप बोलिएगा। ये आपकी कैपिटल बजटिंग और ये क्या चीज़ होती है? सर, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हम जिसका जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए, उसका बेनिफिट
एक्सपेक्ट करते हैं, या जिस तरह एक एग्जांपल हो सकती है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स, या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जब इंटर करते हैं तो जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है, या वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू, ऐसा ही है। और इसे सिंपल आप कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग मीन दैट द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, long term commitment of resources. So once we are interested to invest our money for the in a certain area और हम उस पर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो वो हमारी एक कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में ये वाले जो मेन हैं पे बैक पीरियड, सो एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स वगैरह होते हैं। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, a means of assessing whether an investment project is worthwhile or not. मतलब we just have to see कि जी हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये is it worthy or not, mean whether it should be invested or not. So for that purpose investment appraisal is done. Investment project could be the purchase of a new PC for a small firm, or new piece of equipment in a manufacturing plant, or whole new factory. It means आप एक दी पर्सनल कंप्यूटर ले रहे हो, या एक पूरी कोई ज़मीन फैक्ट्री परचेज कर रहे हो, ये उसके लिए हो सकता है। यूज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो अभी बात हो रही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, what I mean discounted cash flows, DCF has been used. Investment appraisal, why do companies invest? Importance of remembering investment as the purchase of productive capacity, not buying stocks and shares of investing in a bank. Buy equipment, machinery for build new plant to increase capacity, amount that can be produced, which means demand can be met, and this generates sale revenue, increased efficiency and productivity. Investment appraisal, dear students, involve investment, therefore assumes that the investment will yield future income streams. Investment appraisal is all about assessing these income streams against the cost of investment, not a precise science. Payback period is one of the calculation, my dear, as all you people is knowing. अजीम से जरा जानना चाहूंगा, पेबैक पीरियड माय डियर क्या होता है? सर वो टाइम पीरियड जिसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, जितना कम टाइम पीरियड इसमें अजीम ठीक है, टाइम पीरियड मीन द टाइम needed in order to recover your initial investment. Okay, what is criteria for accepting the project? सर ये डिपेंड करता है, इसका वैसे तो ये कि जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, मतलब हमने किसी भी बोर्ड के सामने जब हमें पूछा जाएगा कि जी अंडर द पे बैक पीरियड व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट और टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। जी अजीम सर व्हेन योर एनपीवी इज पॉजिटिव। बेटा जी यहाँ तो पॉजिटिव है ही नहीं चक्कर। पेबैक पीरियड आप फाइंड करोगे, फर्ज करें कि आप एक प्रोजेक्ट 1 मिलियन का लगा रहे हो और हर साल आपको 2 लाख उसकी कैश फ्लोज हासिल हो रहे हैं, तो जब आप 1 मिलियन को डिवाइड करोगे 0.2 पे या 2 लाख पे, तो आपके 5 साल आ गए, 5 years, ये पे बैक पीरियड है उसका। अब सवाल है कि
ये 5 साल जो आपके पास अमाउंट निकली है बेस्ड अपॉन डाटा, अब whether project should be selected or not, this is the question that I am asking you. सर इसका यही तो ड्रॉबैक है कि एक तो ये बाद की आने वाली कैश फ्लो उसको कंसीडर नहीं करता। जो टाइम नहीं बेटा, ये पीरियड में अगर आपकी ये इनिशियल है, लेकिन एक पंच लाइन में डायरेक्टली बताएं ना मुझे कि किन बेसिस के ऊपर हम सिलेक्ट करें प्रोजेक्ट को। वो तो आप उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसके ऊपर। सर एनपीवी की बेस पे नहीं होगा सिलेक्ट? बेटा इसमें एनपीवी तो है ही नहीं। नहीं, आफ्टर ऑल जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सब वो हम फोरकास्ट करें ना सर, ओवर द पीरियड के ये प्रोजेक्ट हम लगाएं तो इतनी इन्वेस्टमेंट है और देखिए रिटर्न देखिए ये आ मैंने रहा है। अभी क्या बात बताई है, आप एक अजम्पशन ले लें कि आपने 1 मिलियन का प्रोजेक्ट, आप उसकी कॉस्ट है और हर साल 2 लाख रुपए कैश फ्लोज हासिल हो रहे हैं, तो पे बैक पीरियड निकालो क्या है। फॉर्मूला बनता है पे बैक पीरियड का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ईच ईयर, ठीक है। तो 5 आ रहा है, इसका पे बैक पीरियड 5 आ रहा है, बताइए अब मैं क्या करूं। रिपीट कीजिएगा सर, क्या कह रहे हैं? जी रिपीट कीजिएगा, आपने अभी क्या कहा है? देखो जी, मैंने कहा है एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 मिलियन की है, जी ठीक है, और हर साल हमें उस पे जो कैश फ्लोज इनफ्लोज हासिल हो रहे हैं वो मतलब है कि जी 2 लाख रुपीज़ हैं, तो इसका पे ठीक है। बैक पीरियड कितना निकला? 5। 5। अब मैं क्या करूं? फिर तो 5 साल में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है कि मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। हाँ, जी यार, आप लोग तो फाइनेंस के लोग हैं ना, बताइए ना प्लीज। वजीम, फहद, आप बताइएगा बेटा। फहद इज नॉट अवेलेबल। अजीम, इसका पता क्या है, आप इसमें ये होगा कि जब भी हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो जो पे बैक पीरियड हमने एक्चुअल निकाला है उसको कंपेयर करेंगे हमारे डिजायर्ड या जो एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड। हम कहते हैं कि जी पे बैक पीरियड 4 साल होना चाहिए, लेकिन हमारे डाटा की कैलकुलेशन आ रही है 5 साल, तो लिहाजा हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे बस। अगर जो डिजायर्ड जो पे बैक पीरियड है उससे एक्चुअल अगर कम आ रहा है या उतना ही आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट वुड बी रिजेक्टेड। क्लियर अजीम?
Uh, so that the payback period is what, so we would calculate actual payback period and the desired. If the actual payback period is lesser than the desired one, then a project would be selected. Otherwise, it would be rejected. Now that payback period is simple to use, useful for short-term decision making, useful if the returns are accurate. So income statement, not time related one. Uh, there is a payback period. The length of time taken to repay the initial capital cost requires information on the returns the investment generates. That is, a machine cost is 6 lakh pound. It produces items that generate a profit of pound dollar five each on a production run of 60,000 unit per year. So payback period will be 2 years. Like payback period could occur during a year. Can take account of this by reducing the cash inflows from the investment to days, weeks, or years. So this is the formula which has been mentioned, and that is days, weeks, months, initial investment divided by total cash the received. This is the payback method have been in which just like our cost of machine is pound 6 lakh, annual income streams from investment is uh, that is 25 sorry 2 lakh 55,000 pounds per year. So we can find that the payback period 36 into this. So the months is about 2 year, or 6 and 3/4 month have been computed. Uh, Accounting rate of return, we may find what is the rate of return. So this is shows profitability, allows comparison between projects, income statement streams, not time related. So accounting rate of return is a comparison of profit generated by investment with the cost of the investments. So ARR, so that is the average rate of return or annual rate of return, is average annual return or annual profit divided by initial cost of investment. So you can find about this one. जस्ट लाइक एज हमने एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट मुख्तलिफ सालों में अभी एक्सपेक्टिंग दिस हम उसकी एवरेज निकालेंगे और फिर हम इसके ऊपर डिवाइड करके वी कैन फाइंड द टाइम और वो हमें ओवरऑल रिटर्न्स का पता चल जाएगा. Overall, so accounting rate of return is an investment is expected to yield cash flows of pound sterling 10,000 annually for the next 5 years. The initial cost of the investment is sterling the pound 20,000. Total profit therefore is 30,000. So annual profit. तो हमने क्या किया कि 30,000 डिवाइडेड बाय 5 6 और फिर 6,000 को हमने 20,000 पे डिवाइड करके इनटू 100 किया. तो दिस इज गोइंग टू बी 30%. नाउ विल बी गोइंग टू डिसाइड वेदर हमने इसको करना है या नहीं. Investment appraisal, to make more informed decisions, more sophisticated techniques need to be used. Importance of the time value of money. If you are going to see this in a sense, net present value. Now this is what NPV is based upon the pure discounted cash flows basis. This is take account of changing value of money over time, enable companies at different interest rates to be considered, useful for comparing similar projects with same cost. So net present value takes into account the fact that money values change with the time. How much would you need to invest today to earn X amount in X year time? The value of money is affected by interest rates. NPV helps to
take these factors into considerations. So shows you what you what if your investment would have earned in alternative investment regime. My dear, net present value, a project cost is 1 million. After 5 years, the cash returns are this one. If you had invested the 1 million into a bank offering interest at 12%, the return would be a greater. So you might be better off reconsidering your investment. So uh, NPV basically principle is what? Now, how much would you have to invest now to earn pound 100 in 1 year's time? If the interest rate was 5%, the amount invested would need to be this one. Allow comparison of an investment by valuing a cash payment on the project and cash receipts expected to be earned over the lifetime of the investment at the same point in time, the present. So this is the formula. We place a future value divided by 1 plus I and over n periods like. So where I is interest rate, n is the number of years. The PV of pound 1 at the rate of 10% in 1 year time is 0.9090. If you invested this today and the interest rate was 10%, you would have $1 in a year's time. So process referred to as discounted cash flows line. And present net present value cash flow into discount factor is present value. So PV is this $500 in 10-year time at a rate of interest this. So this amount would be, or इस तरीके के साथ you are supposed to say. My dear, you know that for calculating all such sort of things, we do need cash flows. So cash flows may be calculated through income streams, yield from investment, time value of money, profitability versus risks, and so on, so on. So discounted cash flow, an example of form is deciding on investing in an energy efficiency system. So and that is two possible systems are under investigation. One yields quicker results in terms of energy savings than the other, but the second may be more efficient later, which should the firm invest in. My dear, this is a discounted cash flow system. So year 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cash flows, it's a negative. That is the amount that have been outflowed. हमने invest की. Discount factor at this would be a 1 और net present value is a -1. फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमें कैश फ्लो 75,000, ठीक है, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,10,000, 1,50,000 और ये फिर आप हमारे डिस्काउंट फैक्टर आफ्टर 1 year at this rate, this is discount factor, discount, 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 discount. तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माय डियर ये हमारी वो है. अब हम इन सब को अगर जमा करके, ठीक है, इनमें से निकाल दें तो ये हमारा एनपीवी आ जाता है. मीन दिस इज लाइक, so if NPV is positive, so we would advise the investment should be made, otherwise it should be rejected one. So this is discount cash flow of another example, system B. Same in the case with here is the cash flow which is negative, mean outflow. So factor 1 this one, and ये हमारी 25,000, 75,000 this one, और यहाँ पे हमारे पास 1 lakh, this amount is the NPV. Now point was that कि हमने फैसला करना है तो हमारी NPV यहाँ ग्रेटर है और यहाँ कम है, तो लिहाजा हम सिस्टम ए का ये वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे. Discounted cash flows system A represent the better investment.
system B yield the same return after 6 years, but the returns of the system A occur faster and are worth more to the firm than returns occurring in future years, even though those returns are greater. So this is the way that we have selected. Now, my dear, another approach is the internal rate of return, IRR, and IRR is where NPV is zero, time value related, so enables comparison to made of projects of offering different value. तो ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी फ्यूचर फ्लोज और एनपीवी बराबर हो जाए प्रेजेंट वैल्यू, वो पॉइंट हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है. Internal rate of return allows the risk associated with an investment project to be assessed. So the IRR is a rate of interest or discount rate that makes the net present value to zero, helps measure the worth of an investment, allows the firm to assess whether an investment in the machine, etc., would yield a better return based on internal standard of return, allows comparison of project with different initial outlays, set the cash flows to different discount rates. Software or simple graphing allows the IRR to be found. My dear, ये भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बेसिकली फर्क कुछ भी नहीं है. दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स is simply the modification of the NPV. चूंकि जब हम NPV का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कॉस्ट करते हैं, यहाँ हम सिर्फ ये कर देते हैं कि हमारे पास जो initial cost divided by, बल्कि rather that the present value divided by initial cost है. और अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव साइन है, अगर एग्जैक्ट 1 है तो इसका मतलब ना हमें लॉस हो रहा है ना सब. और अगर हमारा आंसर दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का -1 है या कुछ इस हवाले के साथ, तो फिर इसमें दिस वुड बी the sort of like mean नुकसान होता है. The profitability index allows a comparison of the costs and benefits of the different projects to be assessed and thus allow decision making to be carried out. So profitability index is NPV divided by initial capital cost. So this is the formula. If the NPV is PI is greater than 1 answer, so it should be selected. Or if it is 1, to neither profit nor losses. Or if it is less than 1, तो फिर हमें investment करनी चाहिए. So investment appraisal is a key consideration performs in considering use, ease of use, degree of simplicity required, degree of accuracy required, extent to which future cash flows can be measured accurately, extent to which future interest rate movements can be factored in and predicted. So necessity of factoring in affects inflations. So this is what, my dear, regarding the investment appraisals. My dear, the another topic in your outline is techniques of decision making. I just would like, this is one of the most important area in management or in SM, because you have to
decide whether the decision should be taken or not. Now the question is, now you may say decision making is at all time, whether planning, whether organizing, whether leading, whether controlling, हमें वो चीज करनी पड़ती है। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि सवाल है कि व्हाट इज अ डिसीजन। अ डिसीजन कैन बी डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ एक्शन purposely chosen from a set of alternatives to achieve organizational or managerial objectives or goal. So technically, decision is once that you made your mind to pick the one alternative among the different alternatives on the basis of analysis. So this selection of option basically is the decisions. हम इसी बात को मज़ीद सीमेंटेड करते हुए, प्रूव करते हुए हम कहते हैं कि decision making is a process of choosing the best alternative for reaching objectives. So now that you have a different choices, let's say choice 1, 2, 3, 4, 5, हमने इनको चूज करना है और उसमें से जो बेस्ट है उसको हमने सेलेक्ट करना है. Naturally, it would be supported with some data, some analysis, and after analysis हम ये चीज करेंगे. तो मैंने एनालिसिस को सपोर्ट करके एविडेंस बेस देन आई हैव कम टू नो कि चॉइस बी इज सपोज द मोस्ट बेटर अमंग any other choices. Ladies and gentlemen, this is a decision making. Now, types of decision making में हम programmed decisions, non-programmed decisions, strategic decisions, individual decisions, it may be administrative decisions, it may be group decisions are done. Now, decision may be individual or it may be corporate level, mean as a group. So individual decision making is individual have a tendency to think and question before performing. So corporate decision making naturally we are that the companies have to make a decisions as collective. It may be at the corporate level, it may be at the business level, it may be at the departmental level. So as the picture is making clear, so members are sitting and they are going to decide. So far as programmed or decisions are that, in fact, the programmed decisions are routine and repetitive, and the organization typically develops specific ways to handle them. There are rules or guidelines to follow. Example, deciding, reorder supplies, mean that when a reorder supplies would be given. So in fact, the already some policies have been made, the procedure have been made. So the idea is this one, कि अगर हमारे पास वो प्रॉब्लम ऐसा अगर होता है तो उसमें हमने उस पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस कर लेना है. The company top heads is making policies to whom the discount to be given and to whom the discount would not be given. तो फिर क्लाइंट्स को उन डिसीजंस के मुताबिक जब भी कोई केस आता है तो हम उसको ट्रीट कर देते हैं, हम उसको डील कर लेते हैं. तो ये जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स के मुताबिक हमने उनको ट्रीट किया, दैट सॉर्ट ऑफ डिसीजन वुड बी कॉल्ड द प्रोग्राम्ड decision. Now, my dear, non-programmed decisions are also done. Non-programmed decisions are typically one-shot decisions that are usually less structured than programmed decisions.
So no rules to follow since the decision is new. Example, should the firm invest in a new technology? So because this is a new technology is there, so we have to decide it like कि हम क्या करें और at spot उस situation के मुताबिक without any following the previous references we are going to make the decision. So that is a non-programmed decision. Now I would like to refer you if someone asks you okay, where such sort of decisions are dealt, who is going to make more at the top or at the lower. So common sense is this कि जी अगर हमारे पास जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो मोस्टली सच सॉर्ट ऑफ डिसीजंस आर डन एट द लोअर लेवल क्योंकि फ्रंट लाइन जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है वो जनरली रूटीन मैटर फैसले कर रही होती है जो रूटीन में रिपीटेडली अकर होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जो टॉप लेवल के लोग हैं वो बेसिकली नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को डील करते हैं। जो प्रोग्राम टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली वो डेलीगेट करके नीचे दे देते हैं क्योंकि वो रूटीन में अकर्स होते हैं और उनको उस हवाले के साथ वो नीचे सप्रेस। तो प्लीज दिस इज द पॉइंट इफ समवन आस्क्स यू कि who makes the program decisions more and who makes the non-program decisions. So non-program decisions are mostly dealt at the top, while that the program decisions are dealt at the lowest level. So this is the main important point. Now, so far as is concerned, the strategic decisions, my dear, strategic decisions making is an ongoing process that involves creating strategies to achieve goals and altering strategies based on observed outcomes. For example, the managers of a pizza restaurant might have the objective of increasing sale and decide to implement a strategy of offering lower prices on certain products during off hours to attract more customers. So, individual decisions, as we have mentioned, like when an individual person takes decisions on his own, the process is known as individual decisions, or decision may be good, may be bad one. This is naturally and possible one, like administrative decisions or decisions making refers to the process used to make key strategic decisions by a single individual or a small group. My dear, here I just would like to mention because again there is a question that why decisions we do need to take. So naturally, decisions are taken because we have the problem. So the problem is the sort of hurdle once occurs और उसको फिर remove करने के लिए there are certain rational steps have to be taken. Now, if we ask like what is the decision making process, so naturally first of all problem is identified, फिर हम criterias को देखते हैं, फिर allocation of weights किया जाता है, फिर alternatives को develop किया जाता है और फिर हर alternatives को आप analysis करते हैं और analysis करने के बाद फिर उनमें से जो बेस्ट है उसको हम पिक करते हैं, फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं और फिर हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं कि वेदर द डिजायर्ड रिजल्ट जो था वो हमें मिला है या कि नहीं। ये हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है माय डियर जो हम करते हैं। तो अब इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन making refers to the process used to make key or strategic decision by a single individual or small group. तो वो लोग जो
हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और जो की डिसीजंस करते हैं, ये उनके हवाले के साथ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. Group decisions, my dear, is the sort of decision which is decision making is a type of participatory process in which multiple individuals and acting collectively analyze problem or situations, consider and evaluate alternative courses of action, and select from among the alternative solutions are solutions. तो फर्क सिर्फ क्या है कि हम उसमें इंडिविजुअल और वी मे इन्वॉल्व द ग्रुप type of decisions. My dear, naturally for deciding decisions, there are certain techniques. So these techniques might be used like brainstorming, electronic meeting, Delphi methods, multi votings, and nominal group techniques. NGT हम इनको कहते हैं. So brainstorming, it is a combination of group problem solving and discussions. It works on the belief that the more the number of ideas, greater the possibilities of arriving at a solution to the problem that is acceptable to all. I just would like, my dear, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि हम कोई इनोवेटिव, वाइल्ड आइडिया, यूनिक आइडिया, क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करना चाहते हैं. और रिमेंबर, whenever the brainstorming should be conducted in an environment, तो उसका जो माहौल है और जो उसके डायनामिक्स वो ये होने चाहिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्वांटिटी ऑफ आइडियाज को इनकरेज करते हैं, नॉट द क्वालिटी ऑफ आइडिया. ये हमारा मैटर नहीं है कि व्हाट आइडिया, क्वालिटी आइडिया वाज जनरेटेड, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि हाउ मच आइडिया वाज क्रिएटेड बाय ग्रुप और बाय एन इंडिविजुअल. सेकंड, क्रिटिसिज्म की हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी. जो पर्सन, जो पार्टिसिपेंट है, जो कहना चाहते हैं वो कहें, बट नो वन इज अलाउड टू क्रिएट अ फियर कि व्हाट यू हैव सेड. और थर्ड वन इज दिस वन, free willing is used in brainstorming. My dear, electronic meeting, the decision making process takes place virtually with the help of technology. For example, we can have a Skype call with the client. तो हमारी जो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकल मैनर में हम कनेक्टेड हो सकते हैं, होते हैं. So this sort of meeting, or we can be called an electronic meeting. Here is Delphi method is there which may be used. In this, the techniques are the method of decision making. The facilitator allows team members to individually brainstorm and submit their ideas anonymously. Other team members do not know the owner of the ideas. The facilitator then collects all the inputs and circulates them among others for modifying or improving them. This process continues until a final decision is made. ठीक है. तो बात यह है कि हम तमाम लोग उस इश्यूज़ के ऊपर बोलते हैं, बात करते हैं और फिर उनको शेयर किया जाता है. और जितने भी लोग, जो उनमें से जो कॉमन पॉइंट्स अलहदा होते जाते हैं वो तो डिसाइसिव हो गया. और जिनके ऊपर कोई हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, नेचुरली हम उसको फिर कंसिडर कर देते हैं. मीन यहाँ तक कि हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो यूनानिमसली डिसाइड हो जाए. सो दिस इज द
point that Delphi methods में. अच्छा माय डियर, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, कि अगर आप पोलराइजेशन इज अ टेंडेंसी to shift toward more extreme positions after group discussions. ठीक है, कि हमारी डिस्कशंस हुई और अगर हम बहुत एक्सट्रीम डिस्कशंस हमारी, तो इसका मतलब उस ग्रुप में पोलराइजेशन पाई गई, तो लिहाजा उसमें हम दैट इज व्हाट रिस्की, न्यूट्रल, कॉशियस. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये वाली स्टेट उसके अंदर रहे, क्योंकि ये एक्सट्रीम रिस्की और इंसान कॉशियस का मतलब है कि बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, तो नेचुरली आई थिंक अगेन आइडियाज कैन नॉट बी generated one. So here is decision making and the zero sum game, my dear. This is very well known one sentence he used. So the sum of all is 0 1. So this is the decision making should not be a zero sum game where one party benefits at the expense of the other. Mean that if win lose strategy is used, I'm going to win at the expense of other, so naturally mean this is a losing point, and such sort of environment would not be. Rather that in the decision making, so win-win strategy, we must have to use the integrative type of policy, and the benefit should be derived by both parties. If I just would like to take and to enjoy all the parts of the apple, ठीक है, वो slices अगर सारे मैं खाना चाहता हूँ, तो I would be winning, but the other one would be losing. ठीक है, तो naturally this sort of any decision making कि मैं जीत जाऊं at the expense of other, तो वो मुनासिब नहीं होगा. That's what I think. Instead of win-lose, uh, win-win strategy should be opted, mind you. This is all about today's, ladies and gentlemen, for making these sort of areas, और जिसमें हमने आज चीज़ों को देखा डिसीजन मेकिंग के हवाले के साथ, और डिसीजन मेकिंग को डिफाइन किया हमने, प्रोग्राम डिसीजंस, नॉन प्रोग्राम, इंडिविजुअल, ग्रुप के हवाले से बात की. ठीक है जी, और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से बात की हमने. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हवाले से बात की, जिसमें हमने कहा कि जी जो इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल हम कर सकते हैं बाय यूजिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, आईआरआर, so profitability index, and payback period may be used, or how such can be used. देन हमने कॉस्ट बिहेवियर के हवाले से बात की थी आज, कि जी हमारा जो कॉस्ट बिहेवियर है वो इज गोइंग टू बी लाइक देयर इज अ वेरिएबल कॉस्ट और देयर इज अ फिक्स कॉस्ट. सो वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो वेरी करती है विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मीन in totality. For example, you are going to make one chair, so you need a wood of one chair. Or if you are making a 10 chair, so your material in terms of furniture mean that wood that would be increased. So that's why I think wood uses is a variable cost one. ठीक है, इसी तरह फिक्स कॉस्ट होती है जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, वो फिक्स्ड इन टोटल, और वो चीज़ वहाँ एक्टिविटी हो या ना हो, that to be incurred, that to be done by this one. So this is all about the discussions that we have extended.
I hope so. You will go on to see all such sort of things, और इस तरीके के साथ आप चीज़ों को ये देख सकेंगे और इनको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा जो डिसीजन मेकिंग और ये जो एरियाज़ हैं और इसी तरह ये कॉस्ट बिहेवियर के एरियाज़ हैं, ठीक है, इनको हम देख सकते हैं और ये यूज़ किया जा सकता है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और पर्टिकुलरली दिस वन लाइक, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर a cost might be fixed as well as the variable cost. This is essentials to know, to understand about such sort of things. So, any questions, ladies and gentlemen? I hope so. लोग तो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, but I have delivered my lectures today and hoping due to your examination schedule, I think you might be appearing, and that's why I think people are not participating like fully to take this one. But this lecture have been recorded and have been uploaded, to be uploaded, available. So that would be, I mean, respectfully, you will. इसी में थोड़ा सा दोबारा हम देखना चाहेंगे कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसमें हम सारी जो कॉस्ट प्रोडक्ट की होती है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्स्ड, ये प्रोडक्ट कॉस्ट। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट में ये हमारी प्रोडक्ट है और हम यहाँ पे जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम पीरियड कॉस्ट पे लेते हैं, नॉट दी प्रोडक्ट कॉस्ट। सो दिस इज important one for measuring, for calculating, for computing such sort of things. So this is all about, ladies and gentlemen. So hoping you will see all such things, and if any problem would be there, so you are supposed to talk. Thank you. Thank you. ओके जी, we say thank you. कल मुलाकात रहेगी। खुदा हाफिज।